Alright, Assalamu alaikum. Today we are going to cover the cost volume profit analysis for multiple products. Okay, before we move on, we have to learn certain assumptions that we had done in the previous video for CVP analysis. सबसे पहली assumption ये होती है कि if you are selling multiple products, you have a constant sales mix, यानी कि same ratio में you have to sell those products, which we discussed in the last video as well. Therefore, I don't think there's a need to repeat. So the first assumption is that if you are selling multiple products, you have to keep a constant sales mix. The second assumption is of a weighted average CS ratio or contribution ratio. ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. These are the two assumptions that you have to keep in mind when you are studying cost volume profit analysis for multiple products. Okay. 7 अच्छा, number of steps for BEP. इसके कुछ standard steps हैं to achieve to a BEP. That is break even point. How to calculate BEP. सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले you are going to find out contribution per unit individually. That is for each product separately. ठीक है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग आपने सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. द सेकंड इज कि आप निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर मिक्स. फॉर एग्जांपल एक मिक्स है 6:8, यानी कि 14 यूनिट्स का हमें टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है, जिसमें से 6 यूनिट्स आर फॉर ए एंड 8 यूनिट्स आर फॉर बी. तो जब हम लोग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, उसी को मल्टीप्लाई करके हमें सेल्स मिक्स एक मिक्स हमारी एग्जांपल के अकॉर्डिंगली 14 यूनिट्स कंप्राइज करता है. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल कंट्रीब्यूशन पर मिक्स ऑफ 14 यूनिट्स फॉर एग्जांपल. द थर्ड स्टेप is to find the break even point in mixes. सबसे पहले तो you are going to find the break even point in mixes कि इतने मिक्स सेल करेंगे, इतने जो है वो इतने मिक्स सेल करेंगे, इतने रेशियो में सेल करेंगे. So you are going to achieve your break even, and then you will simply find the BEP of each product. So basically how you are going to do? Multiply step 3 with standard ratio. अभी जब हम example करेंगे, so these steps will be pretty clear to all of you. But before we move on to the examples, please copy the steps and then we will move on to the examples. Okay. So the example is that the company is selling company sells 2 products. ठीक है, product A, in the ratio 8:6. Now product A and product B. Selling price for product A is $120 and for product B is $80. For variable cost for product A is $45 and variable cost for product B is $30. अच्छा, fixed cost, total fixed cost we have $45,000. You are required to calculate BEP for each
product. Okay, so we will follow the steps exactly like they're supposed to follow. सबसे पहले तो हम मिक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. मिक्स क्या है? 8:6 फॉर ए एंड बी. यानी कि अगर हम 14 यूनिट सेल कर रहे हैं टोटल, तो उसमें से 8 यूनिट्स आर गोइंग टू बी फॉर प्रोडक्ट ए एंड 6 यूनिट्स आर गोइंग टू बी फॉर प्रोडक्ट बी. सो इन वन ट्रांजेक्शन you are selling 14 units. Acha. Now our first step was to find contribution per unit. So for A, contribution per unit is selling price, that is 120, variable cost, that is 45. So contribution per unit amounts to $75. ठीक है. सेम स्टेप फॉर बी. आपकी सेलिंग प्राइस वॉज $80, योर वेरिएबल कॉस्ट वर 30 एंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज $50. ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट. ओके. नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप क्या था कि हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिक्स निकालेंगे. ठीक है. सो कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिक्स कैसे निकालेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन पर मिक्स. एक मिक्स के अंदर हम 8 यूनिट्स ऑफ ए सेल कर रहे थे, यानी कि $75 कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 8, बिकॉज एक मिक्स के अंदर 8 यूनिट्स ऑफ ए है, प्लस 50 contribution of B multiplied by 6, because for in each mix we have 6 units of B. So we will get a total contribution of $900 per mix. एक ट्रांजेक्शन के अंदर we are incurring और we are attaining a contribution of $900. ठीक है. Now second step is also complete. Let's move on to the third step, that you are going to find out your BEP in mixes. क्या मतलब होता है? Simply you will divide your fixed cost by contribution per mix. That is your step 2. 45,000 for 450,000 were our fixed cost, divided by 900. So you will get 500 mixes. It means that the entity has to make 500 transactions, जिसमें एक ट्रांजेक्शन के अंदर 14 यूनिट सेल हो रहे थे. So for 500 transactions आपको करनी होंगी in the ratio 8:6 to achieve a break even point. ये हो गया हमारा स्टेप 3, कि हमें ये पता लग गया कि हमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स करनी है 500, जिसके अंदर ईच ट्रांजेक्शन के अंदर 14 यूनिट सेल ऑफ हो रहे होंगे. Okay, now step 4. Step 4 was that you are going to find out individual BEP. BEP for each product. That is going to be A. हमने कहा था कि स्टेप 3 को जो है वो रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो स्टेप 3 का आंसर था हमारा 500, क्योंकि 500 ट्रांजेक्शन्स करनी है और एक ट्रांजेक्शन के अंदर 8 यूनिट्स ऑफ ए है. सो वी आर गोइंग टू सेल टोटल 4000 यूनिट्स ऑफ ए एंड बी. के लिए हमारे पास सेम 500 ट्रांजेक्शन्स मल्टीप्लाई बाय 6 यूनिट्स इन ईच ट्रांजेक्शन, दैट वी विल गेट 3000 यूनिट्स ऑफ बी to sell to achieve a break even point. Okay. Now similar चीज इसके अंदर एक चीज और होती है, that is if target profit अगर टारगेट प्रॉफिट हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स में है तो हम क्या करें? जिस तरह से हमने टारगेट प्रॉफिट को सिंगल प्रोडक्ट में डील किया था, वी यूज टू सिंपली ऐड द टारगेट प्रॉफिट इन स्टेप 3 और फिक्स कॉस्ट के अंदर हम ऐड कर देते थे. सो यू आर गोइंग टू फॉलो द सेम रूल हेयर, जस्ट ऐड टारगेट प्रॉफिट इन स्टेप 3. सिंपल. एक इसकी एग्जाम्पल भी कर लेते हैं. ओके. योर सेलिंग रेशियो इज 6:4. ठीक है, फॉर प्रोडक्ट ए
and B. Selling price is 90, and for product B it is 110. Variable cost is 40 for product A and 45 for product B. Fixed costs are $168,000. Your target profit is $28,000. You are required to first calculate BEP, simple BEP in units, and secondly you are required to calculate target sales. अच्छा, सेम स्टेप्स वी आर गोइंग टू फॉलो. सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये हमने अपने क्वेश्चन में इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर. दैट इज गोइंग टू बी 90 minus 40, $50 फॉर यूनिट ए for product A, and 110 minus 45, that is 65 for product B. ठीक है. Now we are going to calculate contribution per mix. For contribution per mix same, हम लोग A के 6 units sell कर रहे थे एक ट्रांजेक्शन के अंदर. We had 10 units. Out of those 6 units were for A and 4 units were for B. So 6 multiplied by 50 plus 65 multiplied by 4, that is going to give you a $560 contribution per mix. ठीक है. Okay. Now first requirement that was to calculate BEP simple. तो fixed cost upon contribution per mix. Fixed costs were 168,000 simple divided by 560, which showed that we have to sell 300 mixes to achieve a break-even point. That is a no profit, no loss situation. ठीक है. So the number of units are going to be for A again 300 हमें mixes sell करने हैं और एक mix में हम 6 units sell करते हैं. So it is going to be 1800 units of A, and for B we will have again 300 mixes and 4 units in each mix, that is 1200 units of B. अच्छा, अगर हम अपना टारगेट प्रॉफिट ऐड करें इसके अंदर, दूसरी रिक्वायरमेंट फिक्स्ड लॉस प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर मिक्स, इट इज गोइंग टू गिव यू 168,000 plus 28,000 divided by 560, which is equals to 350 mixes. That is, if you want to achieve 28,000 profit, you have to sell 350 mixes, or you have to perform 350 transactions in order to achieve your required level of profit. Okay, so the number of units are going to be, again for A you are selling 350 transactions, and in each transaction you are selling 6 units of A. Therefore you will sell total 2100 units of A. And for B again same 350 transactions, and in each transaction you have 4 units, so you are going to sell 1400 units of B. So this is how you incorporate target profit in multiple products and calculate the break-even point, as well as calculate break-even units, as well as calculate the units to achieve your target profit. अच्छा, सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है कि हम प्रॉफिट को जो है वो प्रॉफिट में लॉस और प्रॉफिट दोनों को कंसीडर करते हैं, और एक्टिविटी में भी हमारे पास यूनिट्स भी होते हैं और रेवेन्यू की टर्म्स में भी होती है, डॉलर्स की टर्म्स में भी होती है. सो व्हेन इट इज़ इन डॉलर टर्म्स तो हमें एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं CS रेशो. जैसे हमारा BEP कैलकुलेट होता था ना इन रेवेन्यू टर्म्स, अगर हम BEP कैलकुलेट करते थे तो हम एक चीज़ कैलकुलेट करते थे, दैट वाज CS रेशो, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो. तो उसका फार्मूला क्या होता था, फिक्स कॉस्ट अपॉन CS रेशो. तो हमारा डायरेक्टली जो है वो डॉलर थाउजेंड्स में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता था कि इतने रेवेन्यू पे हम ब्रेक इवन कर रहे होते थे. अब सेम चीज़ जो है वो अप्लाई होती है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए, बट बिफोर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को अप्लाई करें हम उसके अंदर CS रेशो नहीं लेते, हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज CS रेशो. वेटेड एवरेज CS रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेटेड एवरेज CS रेशो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स मिक्स मतलब सेल्स पर मिक्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर मिक्स.
सेम चीज़ थी जब हम वहाँ पे यूज़ करते थे कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, हम यहाँ पे भी सेम चीज़ यूज़ करते हैं। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है, कंट्रीब्यूशन पर मिक्स अपॉन सेल्स पर मिक्स। CS रेशो जैसे हम करते थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेम चीज़ होती है कंट्रीब्यूशन पर मिक्स अपॉन सेल्स पर मिक्स। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट इट गेट्स मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, so we have two products again, product A and product B. The ratio to sell product A is 6 and for product B is 3. So we have 9 units in each transaction. ठीक है, selling price for product A is 25 and for product B is 40. The variable cost is $10 for product A and $15 for product B. So we have a contribution of $15 for product A and $25 for product B. It is given in the question. आपकी फिक्स कॉस्ट है $100,000 and you are required to calculate BEP in रेवेन्यू टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन। हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें ऑलरेडी गिवन है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर मिक्स, यानी हम स्टेप 2 से स्टार्ट करेंगे। $15 हमारा कंट्रीब्यूशन था और हम एक मिक्स के अंदर 6 यूनिट्स ऑफ ए सेल कर रहे थे, प्लस हमारा कंट्रीब्यूशन फॉर बी वाज 25 एंड एक मिक्स के अंदर हम 3 यूनिट्स ऑफ बी सेल कर रहे थे। सो आवर कंट्रीब्यूशन पर मिक्स वाज $165 पर मिक्स। ठीक है, नाउ सेल्स मिक्स। अच्छा, अब हम सेल्स पर मिक्स कैलकुलेट कर ले, बिकॉज हमें वेटेड एवरेज के लिए हमें सेल्स पर मिक्स भी निकालनी होती है। तो सेलिंग प्राइस फॉर प्रोडक्ट ए वाज 25 एंड इन ईच ट्रांजेक्शन वी वर सेलिंग 6 यूनिट्स ऑफ ए, plus selling price of product B that was 40 and in each transaction we were selling 3 units of B. So sales per mix आ जाती है हमारी $270 sales per mix. ठीक है, so to calculate weighted average CS ratio, simple हम क्या करेंगे, we are going to divide your BEP, that is your, sorry, we are going to divide our fixed cost, that is 100,000, बल्कि नहीं, पहले वी हैव टू कैलकुलेट आवर वेटेड एवरेज सीएस रेशो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्स पर मिक्स दैट वर 270 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर मिक्स दैट इज 165, which is going to give you $18 upon 11 एंड देन हम बीईपी इन रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल तरीके से, फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड एवरेज सीएस रेशियो दैट इज $100,000 अपॉन 18 अपॉन 11, उससे आपका आंसर आ जाएगा बीईपी इन रेवेन्यू। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस लेक्चर, जिसमें हमने सारी चीज़ें मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सिंगल प्रोडक्ट्स और ब्रेक इवन चार्ट्स कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह वी विल continue in the next video with another chapter. Thank you. Allah Hafiz.